you are having any network issue. 1 light minute. Shamank, what is 1 light minute? What into what? Sir, it will be the speed of light Correct, correct. Very good. into 60 seconds. Speed of light into Speed of time. light, नहीं हाँ, speed of light मतलब in second. No, speed of second. light in meter per second into time. हाँ, And time into will be in time. minute. 60 seconds. Yes. 3 into 10 raised to 8 into 10 raised to 8 into 60, that is 180 into into 10 16. raised to 8. Into It is equal 1 to minute, which 18 is into 60 10 seconds. raised to 9. Very good. 1.8 into 10 raised to 10. Superb, superb. You all are doing one. This is nothing but 1.8 into 10 raised to 10. into 10 raised to 10 in meter. Okay. Yeah. Khushbu, Yes, sir. 1 light second. Can I write 3 into 10 raised to 8 into 1 second? Yes. That means 3 into 10 raised to 8 meter. Yes. Okay, this much I think I had done in the last class for every student except Bhavya. Now it is clear. Can I go to the next definition? Sir, wait a second. Okay, waiting. Once you get the timetable for your first exam, please pass me on. Okay, sir. And as a rule now, every lecture there will be small test. Once I complete the chapter, then half an hour test. Otherwise, just 5 to 10 minutes test. You will write the test in your book, take its photograph, post me so that I will download, correct and resend you. Okay, sir. Sure. Once you are cooperating properly, Nasi, you will get full mark. Cooperation should be in time, in interaction, writing test properly, asking doubts. Yeah, sir. चलो अभी एक नया डेफिनेशन ऑफ लेंथ ओनली. Now we will do Parsi, right? Parsec, not Parsi. Parsec. Parsi is the community. Par stands for parallel. Second stands for angle. Have I told you about radian? Yeah, sir. 180 degrees. How many radian? 2 radian. Pi something pi. Pi radian. 2 radian. Pi. No, pi. अच्छा, हाँ. Pi. और इधर C लिखा था. C is symbol for radian. ऐसा. If you are writing like this, then you can put C. 180 degrees pi radian. 1 degree is called as one minute. It's called 60 minute. Huh? One line means 60 minute. And 1 minute is 60 Degrees. second. 60 second. Double line. 60 second. Double line is one line. See, C is for radian. 1 is for minute. 2 line above is called second. So parsec means angle subtended in second. Second मतलब क्या देखो? 180 degrees pi radian. Okay. So 1 degree will be nothing but pi upon 16 radian. Got it? Yeah. Now if I have to convert it into minute, 1 degree is 60 minute. Pi upon 180. 180 into 60 into, if I convert into second, then you have to keep on multiplying by another 60. Shaman, put off the video beta. क्या ना कभी कभी वो फ्लक्चुएट हो जाता है. चलो वापस पार्सेक का मीनिंग पहला समझते हैं क्या है. How many of you have seen ammeter, voltmeter? ऐसा device have you seen? No, sir. No, sir. No? Okay. Suppose this is one device. Here there is needle and नीचे ऐसा marking रहता है. This is needle. Sometimes when you see slightly cross, तो needle थोड़ा सा आपको दूर दिखता है ना ऐसा. If my eye line is exactly on this needle,
then this line will coincide with the proper marking. If I am slightly crossed, तो मुझे थोड़ा इधर नहीं तो इधर दिखता है, थोड़ा सा hardly. हाँ. That is called parallax error. That means your eye is not in parallel. You are getting some error. What is that called? Parallax error. Yeah. So this parallax से पार This आ गया. happens because of positioning of the eye, na? Yeah. So that error is called parallax error due to positioning of eye not being in coincident with the line. So from that they have lifted this word par. Sec is for the angle subtended in second. Second is very small angle. So it is called parsec. So parallax and second se mil gaya parsec. Now what is 1 parsec? 1 parsec is the distance from where the semi, I'm explaining meaning, from where the semi major axis of orbit of Earth, semi major axis of orbit of Earth. Orbit of Earth means that one astronomical unit. See, this is the orbit of Earth. So this mean distance we take as what? parsec. No, mean distance we take astronomical unit. अच्छा सर तो- थोड़ा नहीं समझ रहे, वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? इस पूरा इंग्लिश में बोला इसलिए क्या? नहीं नहीं हाँ, मतलब एक मिनट सर ये सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ऑर्बिट है। देखो पहला तो सेमी मेजर के बारे में मैंने कुछ समझाया ही नहीं, तो समझेगा कैसा? सेमी मेजर किधर समझाया आपको ना? किसी को नहीं समझाया। रुको, 1 parsec is the distance from where, खाली मैं अभी ऑर्बिट का मीनिंग समझा रहा था, where the semi major axis orbit of Earth. See, I have not explained anything. I am just writing definition first. 1 parsec is the distance from where semi major axis of orbit of Earth subtends an angle of 1 second. It is distance from where semi major axis of orbit of Earth subtends angle of 1 second. Just write this much, then I'm explaining everything. Bhavya, don't take tension. Huh? I will explain. Yeah, sir. Yes, just write down this so that I can clear this and explain in the meaning. Okay, of Earth subtends parallax an angle of 1 second. नहीं, parallax तो ऊपर वाले का आ गया. For explaining us. Parallax नहीं था, parallax तो इसके लिए लिखा. School में teacher has done till this or she is ahead of us? नहीं, we did not और start. हमारे क्लास में तो चालू ही नहीं हुआ है। और सर हाँ. क्लास में आज लेक्चर था पर मैम ने कुछ सिखाया ही नहीं। No, but once they start, they will run, na? Our teacher is sick. Oh. See, properly concentrate because of no physical lecture. Na? Many times they may reduce the syllabus, but we have to study everything because in higher standard nothing is reduced. So let the syllabus be reduced. Let the teacher not teach anything. We will see to it that we study everything. I was telling that section B, like ये chapter का section B will be on hold. Most probably it will be there, but as the lab is not available, Oh, acha, section B will be on hold. correct. Because of that instrument, hai na? Yeah, sir. So everybody has written now. The last line. Wait. Okay, right now, right. Third one, you can erase it. Okay. Now what is 1 parsec? It is distance from where
the semi-major orbit of semi-major axis of Earth's orbit. If this is orbit of Earth, then this distance is called semi-major axis. Longer distance ka half of orbit is called semi-major axis. Okay, semi-major axis followed. Yes, sir. So this semi-major सर नहीं axis, समझा. अरे सेमी मतलब हाफ है ना, अर्थ ऐसा घूमता है ना सन का आजू बाजू में, इलिप्टिकल पाथ में ना, इसको इलिप्स बोलते हैं, इलिप्स पाथ पे. ठीक है, तो इसका ये बड़ा वाला जो लाइन है ना, एंड टू एंड पासिंग थ्रू सेंटर, उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस. बड़ा है ना वो. और ये सेंटर वाला लाइन को बोलते हैं माइनर एक्सिस. इतना समझा क्या नहीं है अभी? हाँ सर उतना समझा. अभी ये सर्कल बनाया अगर मैंने, सर्कल का डायमीटर whether you draw horizontal or vertical, it will be same na. Yes sir. So that's why it is nothing called as minor or major, उसको खाली diameter. तो इसका ये longer diameter को major axis, smaller वाले को minor axis. ठीक है, still not followed? No sir, followed. What is half part of circle called? Radius. No, semicircle. Semicircle. So whenever you cut something half, it becomes semi. So this half part of major axis is called as what? Semi major axis. Okay, clear? Hello? Yes sir, clear. Clear. Okay. So semi major axis is nothing but approximately mean radius of Earth's orbit. Is it one astronomical unit? Yes, sir. Yes sir, it is. It is, yes. तो ये सपोज एक पॉइंट P इधर लिया, तो इधर से इसका डिस्टेंस, ये एंगल बहुत बड़ा दिख रहा है, इधर ज्वाइंट किया, ये एंगल इधर ज्वाइंट किया, ये एंगल जब ये बन गया 1 सेकेंड, तो ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 पार्सेक. नहीं समझा लगता है अभी भी. ये सेमी मेजर एक्सिस ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट, इधर से आई एम मूविंग अवे 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 अवे, wherever this distance makes angle of 1 radian with this part of the orbit, there it is called as what? It is called as parsec, that distance. Distance Sir, is this is called, not the part of the orbit. No, it is. No, in no. the orbit. it is semi major axis of the orbit. This is the orbit. Orbit का ये semi major axis, हाँ. इधर सेपरेटली बना रहा हूं मैं, तो ये कुछ तो डिस्टेंस पे एंगल 1 सेकेंड देगा. ये जो डिस्टेंस है उसका नाम क्या है? पार्सेक. और ये किधर तक, मतलब ये अबाव ऊपर जाएगा कि साइड में ऊपर जाएगा? नहीं, वो तो 3.26 लाइट ईयर होएगा. अभी बनाते हैं ना हम लोग, एंगल नहीं बहुत सर, छोटा. नहीं, कौन से डायरेक्शन में ऊपर जाएगा? वो किधर भी ले लो, राइट लेफ्ट, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है ना. वो डिस्टेंस का नाम है पार्सेक. नो, See, if I take this as orbit of Earth, अभी ऐसा देखो, orbit of Earth इस सेमी मेजर एक्सिस, इधर से समझा तो ऐसा, नीचे लिया तो ऐसा, इसको इधर कट करके एज्यूम किया तो ऐसा. That distance, which is 1 angstrom unit, at anywhere, some place it will give 1 radian, no, 1 millisecond. There, that this distance of point is called as what? Parsec. Okay. हेलो, हाँ सर. अब वापस से सेमी मेजर एक्सिस का वैल्यू है 1 एंगस्ट्रॉम. वो मैं ऐसा ले सकता हूँ, मुझे जिधर जगह मिलेगा उधर लूंगा, ऐसा ले सकता हूँ, ऐसा भी ले सकता हूँ. फिर मैं इधर से दूर 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 जाके चेक करता हूँ ये एंड पॉइंट के साथ एंगल 1 सेकेंड किधर आ गया, जिधर भी आ गया वो डिस्टेंस का नाम क्या है? पार्सेक. नहीं समझ में आया अभी भी? समझो सर. Okay. So what is 1 parsec?
It is distance of सर a 1 point. सेकंड कितना डिग्री हो गया? 1 One- second मतलब 1/3600 360. डिग्री होएगा. 1 degree is called as 60 minute. ओके सर. So 1 minute is 1/60 degree. इसको और भी 60 से डिवाइड किया तो it becomes second. Okay. ओके सर. तो सबको डेफिनेशन तो समझ गया. Now we'll derive its value. Hello. Yes, या sir. सर. Now if Sir. this is yes. सर वो जो इसका जो width है सॉरी जो this one. This one. नहीं सेमी मेजर हाँ This is आशीष 1 का width है. angstrom unit. अच्छा वो 1 AU है. हाँ 1 AU. ओह 1 astronomical unit. 1.496 into 10 raised to 11 meter. इससे बहुत दूर जाएंगे तभी एंगल छोटा दिखेगा. पर हम लोग को सर एवरेज उधर किधर आएगा? एवरेज तो आगे आना चाहिए ना. और एवरेज तो थोड़ा कैसा अर्थ का ऑर्बिट. सर कैन यू ड्रॉ वन? हाँ नाउ दिस इज द वेयर इज द This is sun. हाँ तो This is earth. This is distance some instant. This is distance some instant. This is some instant. This is some instant. This is some instant. इधर बहुत छोटा है ना, फिर बड़ा बड़ा हो जाता है. तो ये सब को ऐड करके जो डिस्टेंस आता है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, है ना. हाँ सर पर अभी सेमी मेजर अभी सेमी मेजर एक्सिस तो ये होता है. अभी ये इतना भी डिस्टेंस नहीं है, ये इससे रेडियस से ज्यादा है, तो सबका एवरेज निकाल के अप्रोक्सीमेटली वो लोग ने सेमी मेजर एक्सिस. अच्छा मतलब सेमी मेजर एक्सिस इज नॉट फ्रॉम द सन टू द No. Semi major axis is from center to this हाँ. end point, not from sun. हाँ then it is possible. Correct. Okay. Acha, you are taking that as from sun, then it was not possible. हाँ I told कि how will the average lie there? Yes, correct. अभी देखो, अभी ये पार्ट है ना, सर्कल का पार्ट. If it is circle, then what is this part called? Arc. This part is called what? Arc, no? Minor arc. If this is circle, the small part is called as what? Arc. Minor arc. No, it's called just arc. हाँ. Say 1 minute. I'm telling circle, not ellipse. If this is circle, I cut into many parts. Then each part, this small part, they are called as what? Arc. No? Yes sir. Yes, sir. And this arc, if it is very small, then it is like line. No? Yeah. So this part is like line. What is this distance from center called as? Radius. Yeah. And this angle is theta in radian. Okay. Hello. Yes, sir. So this arc length, when I invert it, इधर से ले ऐसा, तो can I say this is like S R theta? भव्य वीडियो बेटा बंद करो, नहीं तो unnecessary fluctuate होएगा ना. So there is one formula which you are going to study in higher standard. Length of arc S equal to R theta, where theta is in radian. What is formula for length of arc? R theta. What is formula for length of arc? R theta. हाँ. R theta. Very simple. R R मतलब radius. Radian ना? Radius. Radian. Sir, can you explain once more radius or radian? Theta is, radius means distance from center to the point on circle. हाँ. Radian means angle subtended by the ray. This angle is radian. Its unit is radian. Okay. So radius is length, radian is angle. Sir, फिर से बताइए, I didn't really follow. Who is saying this? Me, Abhik. What you have not followed? First, you have to tell me that now. How do I understand what you have understood? From the radian part. Were you connected every time?
Yes. Okay. Because Almost when you got get disconnected once, I guess. because when you get disconnected, then few words you will not be able to hear. Na? See, what is this? Is it circle? Yes. What is full distance called as? Circumference. What is that value? 360 degree. 2 pi r. 2 pi r. Can I say 2 pi r means 360 degree? Correct or not first? Yes. Now, any part, small, any part means the arc. Huh? So, any part S will correspond to some angle theta. है ना? Yes. थीटा. अभी मैं रेडियन नहीं बोल रहा हूँ, डिग्री पे बात कर रहा हूँ. तो पूरा सर्कल मतलब कितना डिग्री? 360. 360. Yes. तो S equal to suppose theta degree. Yes. So can I say theta into 2 pi r is S into 360 by unitary method? Yes. अभी ये थीटा डिग्री में है अपना, अगर इसको रेडियन में कर दो ये थीटा को, तो 360 2 पाई रेडियन होता है क्या? नहीं. उस दिन बताया था 180 डिग्री इज कॉल्ड पाई रेडियन. सर ये कैसे मिला? हाँ, ये बताया 180 पाई रेडियन. बिकॉज अगर ये आर्क को 1 लिया, इसको 1 लिया, रेडियस को 1 लिया, तो थीटा 1 हो जाएगा ना. एस इक्वल टू आर थीटा में सब 1 हो जाएगा ना. हाँ नहीं सर, मुझे सिर्फ इतना, मुझे ये नहीं समझा कि रेडियन पाई रेडियन 180 डिग्री क्यों होता है? ये कन्वर्शन है उसका. पाई रेडियन इज कॉल्ड एज 1 डिग्री, 180 डिग्री. ओके, 2 पाई रेडियन 360, पूरा सर्कल 2 पाई रेडियन होता है. हाँ, तो 360 डिग्री पूरा सर्कल 3 पाई रेडियन 2 पाई रेडियन हो गया. So radian is equal to the radius. Radian will be equal to radius if radius is 1, theta is 1. See, पहले ये s equal to r theta, ये सब 1 1 लिया, तो अपना रेडियन क्या हो गया? Length of arc when it is equals to radius, then angle is called 1 radian. So when length of arc is 2 pi r, then it is suppose theta radian. तो ये r कैंसिल होके पूरे के लिए कितना हो गया? 2 पाई. क्या नहीं? Yes sir. फिर से एक बार फिर से अभी आपको 11th में, अभी 9th में नहीं है सब. S equal to r theta. S is suppose 1 मीटर, आर्क का लेंथ मतलब मीटर, ये भी 1 मीटर, तो ये थीटा हो जाएगा ना 1. क्या नहीं? हेलो. हाँ sir. So theta, if I write 1 1, so when arc is 1, radius is 1, then angle is called 1 radian. Okay. अभी पूरा आर्क मींस 2 पाई आर ना, सरकमफरेंस है ना. हाँ सर. तो क्या मिल गया? 2 पाई मतलब पूरे का रेडियन ना. पूरा अपना एंगल में क्या होता है? 360. क्या नहीं? सर आपने ये क्या किया? आपने क्या आर थीटा कैसे मिला आपको 180? सॉरी, आर थीटा क्या है? आर थीटा लेंथ ऑफ आर्क है, सब 1 1 हो गया. सब 1 1. पूरा आर्क कितना रहता है? 2 पाई आर ना. हाँ. अभी इसको मैं इक्विलेटरल बहुत अगर सब एक एक का करूँ तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा हो जाएगा ना. बहुत छोटा बनाया तो. पर 2r नहीं, 2r किधर लिखा है? कुछ भी कंफ्यूजन मत लेके आओ दिमाग में. S मतलब लेंथ ऑफ आर्क है, बराबर. हाँ. पूरा सर्कल कितना होता है? 2 पाई आर. हाँ. पूरा सर्कल का जब लेंथ बोलूं तो सरकमफरेंस बोलना, एंगल बोला है तो 360 बोलना. ठीक है. तो पूरे सर्कल का एंगल कितना? 360 डिग्री. तो आर्क के लिए एंगल कितना लिया मैंने? सपोज थीटा. 360 डिग्री मतलब क्या? पूरा सरकमफरेंस. क्या नहीं? हाँ. तो थीटा डिग्री मतलब कितना? थीटा इंटू 2 पाई आर अपॉन 360. दिस इज लेंथ ऑफ आर्क और नॉट? फुल सर्कल 360 डिग्री. 360 डिग्री मतलब आर्क इज पूरा सरकमफरेंस.
तो थीटा हाँ. डिग्री मतलब what is arc? How much? So can I cross multiply? It will be Yeah, theta yeah. into 2 pi r upon 360, not followed. Followed. So S becomes theta upon 360 into circumference. बराबर? हाँ, correct. तो इधर से आ गया वो r थीटा वाला कॉन्सेप्ट, r into theta, because 2 pi रेडियन मतलब 360 डिग्री. तो ये 2 pi कैंसिल होके s इक्वल टू कितना मिला? r थीटा. ठीक है. Okay, sir. अभी दूसरा, ये जब ये आर्क का लेंथ 1, रेडियस भी 1, तो जो एंगल आता है वो क्या होता है? 1 रेडियन. ठीक है. क्योंकि S1 R1 तो ये थीटा 1 ही होएगा ना, 1/1. हाँ सर. अभी आपको इतना कुछ नहीं है, सब 11th में मैथ्स में. अभी आपको खाली इतना समझने का है. ये सेमी मेजर एक्सिस, if I take one astronomical unit, then at what distance this end point will subtend angle of 1 second? That distance is 1 parsec. Okay, have you followed now? Okay. Yes, sir. Follow. Yes, पक्का sir. देखो, झूठा मत बोलो, टाइम बहुत है अपने पास. सच्ची सर, सच्ची. सच्ची आई शपथ. Okay. Yes, Ivani, you followed? Ivani, Kushbu? Yes, sir. Okay. Now my problem is 1 parsec is exactly how many meter or how many light year? So we are doing like this. 1 parsec means distance. Okay. Hello. Yes, sir. So if I consider a very big circle and here cut 1 parsec, so this will be this distance. See, I go on moving, go on moving, go on moving, go on moving. ये 1 मतलब ये आपस में ओवरलैपिंग जैसा होगा ना. बहुत छोटा एंगल है ना, दिखने में तो बहुत छोटा लगेगा ना ये ऐसा. 1 डिग्री का 1/3600 पार्ट इतना बड़ा थोड़ी होएगा, बहुत छोटा होएगा ना. सो नियरली इट विल बी सेम लाइन, तो उसको हम लोग रेडियस नाम देते हैं, और ये इसको आर्क बोल देते हैं, और ये एंगल को थीटा बोल देते हैं, जो बहुत छोटा है, 1 सेकेंड है. तो S इक्वल टू आर थीटा हो गया ना रिलेशन. ये आर्क, ये एंगल, तो ये रेडियस, ये S, ये थीटा. बराबर ना. हाँ सर, बराबर. So we assume like this. Suppose 1 parsec is the distance of arc. So since length of arc, ये वाला derivation आपको मैथ्स में मिलेगा, फिजिक्स में नहीं है. So length of arc equals to radius into angle in radian. Not in degree, in radian. Length of arc. Arc Correct. equals to radius into angle. So our arc is 1 astronomical unit. Radius is 1 parsec and angle is 1 second. So I have to convert. सर One- रेडियस हमारा 1 पार्सेक नहीं है ना. रेडियस 1 parsec है. ये डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं ना. ये ओवरलैपिंग है ना लाइन, और पैरेलक्स की एरर की वजह से डिस्टेंस गैप पड़ गया ना थोड़ा. नहीं समझा लगता है. ये डिस्टेंस है, ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल से, जिधर ये एंगल कितना है 1 सेकेंड. बट ये इतना नजदीक है कि डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है, ओके. तो रेडियस बोलते हैं. रेडियस 1 पार्सेक. 1 मतलब एस्ट्रोनॉमिकल एक्चुअली पार्सेक नहीं है, पर हम लोग एक्चुअली ऐसा तो बोलते हैं. पार्सेक ये है ना, लेकिन हाँ. देखो इससे पैरेलक्स एरर के हिसाब से आ गया ना, तो थोड़ा सा ये इधर होएगा. सी, आप इमेजिन कर सकते हैं 1 सेकेंड हाँ, कितना हाँ, छोटा हाँ. होता है. हाँ, बहुत छोटा 1 है. सेकेंड तो बहुत छोटा है ना. तो ये तीनों लाइन ओवरलैपिंग है, दिखाने के लिए मैं सेपरेट बोल रहा हूँ. हाँ. तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना? मतलब 1.496. ये एक्चुअली ये जो डेरिवेशन निकलेगा वो भी रॉन्ग निकलेगा, वो एक्यूरेट नहीं होएगा. करेक्ट. नहीं, कैसा एक्यूरेट होएगा ना, बहुत गैप है. हाँ. लेकिन कैसा है, सपोज समथिंग इज 1 किलोमीटर, 10⁵ किलोमीटर, आई गेट 0.001 into 10⁵ सेम ही लेते हैं ना इसको.
थोड़ा ही एरर है ना इसलिए. See, any distance which you are measuring will not give you 100% accuracy because ये astronomical distances बहुत दूर होते हैं ना. हाँ तो इसलिए तो नाम पड़ गया ना पार्सेक. तो क्यों, थोड़ा तो एरर है ना पैरेलैक्स की वजह से. पर सर अगर ऐसे देखें तो अगर हम लोग एक्चुअल डिस्टेंस कोई पार्सेक लेते तो हमारा मतलब ज्यादा पार्सेक होते ना. नहीं नहीं, क्या बोल. पार्सेक डिस्टेंस है. पार्सेक कुछ नहीं. पार्सेक मतलब एक डिस्टेंस है. हाँ वो डिस्टेंस किसका है? एक पॉइंट का है. हाँ जो मुझे ये एंड पॉइंट्स ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वाला डिस्टेंस करेक्ट. 1 सेकेंड इतना एंगल देता है. बराबर. पर सर हम पार्सेक भी तो ढूंढ सकते हैं ना वो ट्रायंगल के एल्टीट्यूड ढूंढने से. ये ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड कैसे ढूंढ सकते हैं? अभी ये आर्क जैसा होगा ना जब इसको पूरा सर्कल समझेंगे तो. अभी ये डिस्टेंस हमको मालूम, यही तो ढूंढ रहे हैं हम लोग बोल रहे हैं ये दोनों तीनों एक ही जैसा है. सर पर ये तो सेमी मेजर, ये जो ए बी है वो तो सेमी मेजर एक्सिस पे ना, और सेमी मेजर एक्सिस तो स्ट्रेट है. लेकिन कोई भी चीज अगर बहुत दूर जाते हैं ना, ये सर्कल आर्क लाइन बन जाता है ना. अभी ये सर्कल है बहुत छोटा रेडियस वाला, थोड़ा बड़ा रेडियस किया और भी तो लाइन दिखेगा ना, ये स्ट्रेट दिखेगा. सर सेमी मेजर एक्सिस स्ट्रेट है ना. सेमी मेजर एक्सिस स्ट्रेट है बराबर, लेकिन इसको आर्क समझ सकते हैं ना हम लोग. अगर एंगल बहुत छोटा होगा तो ये एंगल है बराबर, ये स्ट्रेट है. लेकिन ये स्ट्रेट और ये आर्क ओवरलैपिंग होता है ना, ये सर्कल है. ठीक है. ओके ओके. हाँ एक मिनट सो, ये आर्क है, ये अलग अलग है. बहुत छोटा लिया तो ओवरलैपिंग हो जाएगा ना, ये स्ट्रेट दिखेगा ना आपने. हाँ क्योंकि एंगल छोटा है ना इसलिए नहीं समझा शायद. अगर ये बड़ा आर्क लो तो एंगल बड़ा बनाएगा ना. लेकिन अपना एंगल कितना है? 1 सेकेंड. तो ये ऑलमोस्ट लाइन ही हो गया ना, इसलिए ऐसा रहता है. ठीक है. So 1 astronomical is 1.496 into 10 raised to 11 meter. 1 parsec we have to find कितना है, and 1 second is 1 upon 3600 degree or not. yes sir. But I want this in radian. How to convert degree into radian? 180 degree is pi radian. So 1 degree is pi upon 180. Not followed, Bhavya? So into pi upon 180, my entire answer becomes in radian. Okay? yes sir. See, स्कूल वाला टीचर तो बताएगी नहीं आपको ये सब, तो डायरेक्ट स्किप कर देगी. But as I said, we will study everything. Now anybody is having any doubt? फिर वो क्या बोलेगी स्कूल की टीचर? वो बोलेगी take 1 parsec as this much बस, या तो बोलेगी just read it. ठीक है. Any now first any doubt? Forget about it. Any doubt? ये conversion समझ? मतलब 1 parsec into that 1 degree will become 1 astronomical unit. Yes. 1 degree नहीं है, 1 हाँ 1 second 1 second. yes, sorry. that is हाँ. this much. Yes, that is this much. Yes. Okay. हाँ Yes, सर. हाँ सर हाँ हाँ. एक बार अभी मुझे समझा है कि नहीं, मैं एक बार एक्सप्लेन करके आपको बोलूं, आप बोलना ना. Beautiful, beautiful. Yes, perfect. बोलो. हाँ तो हम लोग जब भी हमारा पार्सेक वो होता है जब हम सेमी मेजर एक्सिस से हम लोग, हाँ कोई तो एक डिस्टेंस पे एंगल जब भी 1 हो गया ना, जब 1 सेकंड हो गया, हाँ तो ये डिस्टेंस का नाम क्या है? 1 पार्सेक. पार्सेक. अभी इसको ढूंढेंगे कैसा? ये अगर बड़ा सर्कल का एंगल बहुत छोटा ना, तो ये सर्कल, सपोज एंगल बहुत छोटा, तो ये लाइन आर्क हो गया ना अपना. हाँ हाँ. और ये रेडियस हो गया और ये एंगल हो गया. तो ये आर्क वाला फॉर्मूला है रेडियस इनटू एंगल. तो लेंथ ऑफ आर्क इज रेडियस इनटू एंगल. ओके. ओके सर, समझ गए. अभी 1 सेकंड को मैंने पहले डिग्री में कन्वर्ट किया. इट इज 1/3 डिग्री. फिर रेडियन में कैसा? 180 डिग्री इज पाई रेडियन. तो 1 डिग्री है तो पाई अपॉन 180 रेडियन. तो 1/3600 डिग्री है तो इनटू दिस मच. ओके. यस सर. चलो अभी क्या डाउट है? हाँ 1 पार्सेक हाँ
कितना Now- होता है 1 AU का हम लोग? अभी अभी हम लोग ढूंढेंगे ना इसके बाद। अच्छा सर वो ये तो 1 second is 1 upon 3600 600 डिग्री, to pi upon 180 degree रेडियन raised रेडियन to रेडियन radian. सी मतलब रेडियन, पूरा कन्वर्ट हो गया रेडियन। 90 अच्छा, डिग्री okay. हाउ मेनी रेडियन? पाई बाय 2 रेडियन ना। 180 डिग्री is pi radian. So 1 degree is how many radian? Pi by 180. Okay. हाँ सर So 2 degree will be what? Into 2. 3 degree into 3. 4 degree into 4. 5 degree into 5. 90 degree into 90. That only we are doing, huh? हाँ So मतलब 1 हम लोग upon. को अभी जो पार्सेक मिला है जो हम लोग ने फाइंड किया है हाँ एक्चुअल में पार्सेक उससे थोड़ा बड़ा होगा ना? हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, थोड़ा बड़ा हाँ थोड़ा मतलब एकदम कम होएगा। सी हाँ इफ आई हैव गॉट 10 लाख करोड़ रुपीस, उसमें 1 रुपीस का कुछ मायने है क्या? नहीं रहता। तो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा आने वाला है। दैट्स व्हाई वी कैन Understood, sir. नेग्लेक्ट दैट एरर। Yes, Okay. understood. Now till this anybody is having doubt, so I will explain again, otherwise I will simplify this. Till this no doubt now? No doubt. Okay. Now 1 parsec I want कितना मीटर नहीं तो किलोमीटर नहीं तो लाइट ईयर में होएगा। देखते हैं अब इसको सिंप्लीफाई आगे करके। Therefore 1.496 into 10 raised to 11, ये ऊपर जाएगा ना, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, हाँ into 3600 into 180 upon pi will become 1 parsec or not? Yes sir. चलो पक्का समझा इधर तक भी? हाँ मतलब पार्सेक तो इससे बहुत बड़ा है AU से भी। ये जो भी आंसर आएगा उससे हार्डली थोड़ा सा, ये कॉपी करो फिर पूरा कट करके लिखता हुआ, जस्ट कॉपी। सर मतलब यही हुआ ना कि पार्सेक AU से बड़ा है? हाँ बड़ा ही है ना, इसलिए तो आगे आगे जा रहे हैं ना। AU से बड़ा लाइट ईयर से बड़ा पार्सेक मिलने वाला है। तो सर कितना दूर जाना पड़ेगा फॉर द एंगल टू बी 1 second? वो 1 parsec है ना? हाँ अभी वो ढूंढने वाले हम लोग 3.26 लाइट ईयर। अच्छा This we are getting in meter no now. This is in meter. Can I clear this? No, sir, wait. Okay. yes sir. खाली ये नीचे वाला लाइन ड्रॉप करता हूँ। So therefore 1 parsec equals to 1.496 into 10 raised to 11 into 3.6 into 10 raised to 3 into 1.80 into 10 raised to 2 upon pi is 3.14. Copied this much? Yes, sir. हाँ देखो एकदम सिंपल में समझ गया अभी आप लोग। सेमी मेजर एक्सिस से कितना दूर जाएंगे, सेमी मेजर एक्सिस मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वाला लेंस से कितना दूर जाएंगे, वो दूर को बोलते हैं 1 पार्सेक। जब ये एंगल 1 सेकेंड बनेगा तभी। 2 and 3 is it 5? हाँ sir. 5 and 11 Abhik, is it 16? Yes sir, it is 16. Okay, please put off your video. I said you are starting video.
Don't put on the सर वो video. अच्छा फीलिंग नहीं आता है वीडियो ऑफ रहता है तो. अभी क्या करेंगे और यार? गलती से चालू हो गया रे. हाँ नहीं, गलती से मिस्टेक चलता है, कुछ नहीं से. 2 and 3, is it 5? Yes. 5 and 11, can I say 16? Yes. So 1.49. Sir, you have written 1.80. Okay, 180. 1.80. Then only I can write 10 raised to 2. Yeah. So this is 3.6 into 1.8 into 10 raised to 16 upon 3.14. Okay. Hello, okay. Yes, sir. Yes, अभी sir. अभी देखो ये ध्यान से, ये 3.14 अप्रोक्सीमेटली अगर मैं इसके साथ कैंसिल कर सकता हूँ ना, ये नियरली कैंसिल में वैसा बोल रहा हूँ. देखो 80, ये इसको कैंसिल कर सकते हैं, थोड़ा नजदीक कर दिया. 3 6 18, 6 Yes, sir. I don't know. This is 1.8. This if I take 3, this is 0.6. No, close say I can cancel. No. Yeah, sir. Closest. Approximately. Random. Yeah, random. Approximately we are thinking. So this is, that means this will be 1 point. चलो एक मिनट शॉर्टकट करते थोड़ा और. 1.496 को 1.5 समझा तो चलेगा. अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ. 1.5 समझा हाँ तो सर. चलेगा. 1.5 into 18 किया तो कितना होएगा? 120. 15 into 8, 120. हाँ सर. Carry 12. 15 and 12 will be 27. So 2.7. Okay. हाँ सर. और इसको 3.6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से थोड़ा ज्यादा आएगा. हाँ. Because denominator कम है, so this answer will come close to 3.08 into 10 raised to 16 meter. ये आपको 1 parsec का वैल्यू मिला. 3.08 into 10 raised to 16 इधर हम meter. लोग ने सर इस चैप्टर में bottom- कितना कुछ है मेमोराइज करने को. हाँ, इसलिए तो ये चैप्टर डिफिकल्ट है. थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, रटने का है थोड़ा. पहला 1 astronomical unit, फिर 1 light year, how many meter that, then this 1 parsec, इतनी है. 3.08 into 10 raised to 6 meter. Now this will, yes. अच्छा, नहीं सर, मैंने सबको राउंड ऑफ कर दिया तो मुझे इतना आया कुछ 3.24 ऐसा कुछ आया. हाँ तो बराबर है ना, 3 point something आया ना. हाँ. Into 10 raised to 16 meter. Now just copy this much, then we'll divide by light year value. लाइट ईयर वाले के साथ डिवाइड क्यों करना है सर? तो आंसर और छोटा हो जाएगा. मतलब हम लोग को आंसर आएगा कितने लाइट ईयर चाहिए. हाँ, yes. हम लोग मतलब मीटर में तो कितना ज्यादा है. some meter is something light year. This meter is how many light year? Three point 3 one. किलोमीटर. Can I clear this now? Yes, sir. Okay. 1 light. 3.08 into 10 raised to 16 divided by 9.46 into 10 raised to 15. No, you are saying from textbook. नहीं सर, क्योंकि हम लोग को अभी डिराइव मिल गया 3.08 into 10 raised to 16. What is और 1 light year? 9.46 9.46 into 10 raised to 15 meter. हाँ. Therefore 1 parsec equals to it was 3.08 into 10 raised to 16. Then divide na this. मतलब एक क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइस 9.46 into 10 raised to 15. This is close to 3.26 light year. You have to memorize this. This completes 1 parsec का पूरा history. 1 parsec is 3.26 light year. Sir, So you have to बहुत remember how confusing many था. light years and how many meters per second is. No, you have to just remember 1 parsec is 3.26 light year. Then multiply with 9.46 into 10 raised to 15. You will get answer in meter. Okay. Because this see, I have remembered like this. 1 astronomical unit is 1.496 into 10 raised to 11 meter. Then 1 light year is 9.46 into 10 raised to 15 meter. Then 1 parsec 3.6 light year, 26 light year. These 3 things. Fine.
Okay, can I clear this now? Yes. Sure. So what is SI unit of length? Can you tell me? SI SI unit unit of of length is meter. meter. What Meter. are sub units of length? Picometer, Centimeter. Centimeter, per millimeter, min, nanometer, and Centimeter, micrometer. millimeter, All micrometer. all smaller one are called as sub unit. yeah, Yeah. What is multiple unit? Kilometer. kilometer. Kilometer, light Non- year. To measure the Apne- distance between planetary or heavenly bodies, we require non-metric Astronomical unit. unit. One astronomical unit is how many meter? 1 point 1.496 into into 10 raised to So 11. 10 raised to Ah. 11 meters. and 1 light year is how many? 9.46 into 10 raised to 15. 9.46 into 10 raised to 9.46 meter. into 10 raised to 15 Meter. meters. Meter, correct. And 1 parsec is how many light year? 3.26. 1 parsec is 3.26 light years. Light year. Do you remember in meter? 3.08 into 10 raised into 10 to raised to 16. 16 meter. 3.0 into 10 raised to- This much clear, na? Yes, sir. Yes, sir. There are few very smaller units used to measure sizes of nucleus, atom, that means atomic particle. So hello, Hello, sir. to measure distance between two molecules or wavelength, distance of wave molecule or wavelength or atomic nucleus, the units used are ANG, angstrom, angstrom. It is written A ऊपर डिग्री का symbol, or Fermi denoted by F. 10 raised to minus 15. Now, what is meaning of angstrom or relation of angstrom with meter? 1 angstrom is 10 raised to minus 10 meter. Okay. Hello? Yes, sir. It is 10 raised to minus 10 meter. Size of a molecule. It is wavelength or size of distance between two molecules. I am converting this into nanometer. So 1 angstrom. What is meaning of 1 meter? How many nano? 12. 10 raised to 9 nano. Acha, 9. Because 1 nano is 10 raised to minus 9 meter. So 1 meter is how many nano? 9. 10 raised to 9. 10 raised to 9. Huh? So can you say 1 angstrom is 10 raised to minus 1 nano? Hello, can we say like this? What? 1 angstrom. हाँ, समझ आया. Sir, yeah. how to Then- draw the Fermi ka symbol? F A B C D E F G ka F. I see the 1 F. Okay. angstrom unit is 10 raised to minus 1 nanometer, which is 1 upon 10 nanometer. So cross multiply. 10 angstrom is 1 nanometer. Not followed. Hello, follow this? See, 1 angstrom 10 raised to minus 10 meter, but 1 meter is 10 raised to 9 nano. That will become 10 raised to minus 1. 10 raised to minus 1 is 1 upon 10. 10 Yeah, into yeah, 1. yeah, sir. Followed. This much okay? हाँ Copy? सर समझ Yes. गया समझ हाँ. गया. Just copy this. Sir, हाँ. one doubt. Angstrom का symbol क्या है? A डिग्री है सर. अच्छा, पहले उसको. हाँ, उसके पहले. हाँ, बाद में नहीं, पहले. Yeah, sir. Arav was asking something. या आरो से No. ठीक.
Sir, and we have to write this definition का Armstrong and Fermi जो भी आपने No, लिखा है. no, जितना मैंने लिखा है उतना लिखना है. Fermi we have written, Bhavya. Earlier we have written Fermi value. Yeah. Sir, today I was reading the book also. We received the books. हाँ. There तो it is so less तक, मतलब बहुत कम तक गए वो लोग. 10 raised to I think 24 minus 24 तक they have gone. अच्छा. हाँ. Sir, why is that used then? No, nowadays there are nanotechnology and all. No? मतलब Oh, they did so- not specify meter इसमें. They just gave prefixes. मतलब But no, nowadays there are with wavelengths we can find all that. Multiple. So. So do you think we should like start reading the chapter before you finished? No. You'll not understand. After I complete, you read because Yeah. only this chapter is slightly difficult. Difficult in the sense हाँ sir. this total are memorized वाला चीज ना. Sir, I after was looking at the explanation, it chapter is मुझे very कुछ easy. समझ में ही नहीं आ रहा था ज्यादा. Say moment you open 2 page, you will feel sleepy. वही तो sir. So can I clear this now? Yes sir. चलो. Sir, Sir, एक second. हाँ. sir, femtometer and Fermi are the same. Yes. Femto and Fermi are same. Okay, sir. Can I clear? Yeah, Yes sir. sir. Okay. So all related to length we have completed. Now I'm doing few numericals, then going on mass, because we have got length, mass, and time to be understood as a basic fundamental quantities ka SI units. Sir, 1 second. Yes, 1 angstrom is 10 10 raised to nanometer. Na? minus 10 raised 1 angstrom, 10 raised to minus 10 meter. And नहीं, 10 10 nanometer. angstrom is 1 nanometer. हाँ? 10 angstrom is 1. हाँ. Because this is 10 raised to minus na. 10 raised to minus 1 nanometer. So when you multiply, सर नैनोमीटर और फेम्टोमीटर में ये नैनोमीटर के एमस्ट्रॉन्ग और फेम्टोमीटर में कन्वर्जन होगा फेम्टोमीटर. नहीं हो सकता है, but they will not ask you. All you can convert into meter and relate ना. See like one हाँ. देखो ऐसा 1 millimeter 10 raised to minus 3 meter है बराबर. And 1 centimeter is 10 raised to minus 2 meter. So I can divide this and get relation. No? Yeah, sir. 10 raised to minus 3, 10 raised to minus 2. So this they won't ask. Because see, just checking the relation is not physics. No? Actually, we are not, there is no physics involved here. It is maths we are doing. Now, just check numericals. So once in already just shown on screen, I couldn't copy in time. No, that there was no need to copy. I Sir, said, once we understand this chapter, it is more interesting. then it is easiest chapter of all. So can you repeat what you just showed? Just erase. I told how we can find relation from one unit to other. For example, 1 millimeter is 10 raised to minus 3 meter. 1 centimeter is 10 raised to minus 2 meter. When you divide this meter will be fit to no? Yes, sir. So you will get relation between millimeter centimeter. Because somebody was telling whether we can find relation between Fermi and nano. We can convert all in meter, divide. Like 1 Fermi, 10 raised to minus 15 meter. 1 nanometer, 10 raised to minus 9 meter. Divide, you will get relation between these two. Not followed? Followed, sir. Chalo, come to numerical. Now if you have textbook, you can open in front of you. Heading is numerical. Can you see first question? The wavelength of light of particular color. Can you see that? 1 second, sir. Just open the page number 10. Wavelength of light is 5800 angstrom. But there's an entire list of derived units. Do we have to memorize these? No. Wavelength equals to 5800 angstrom. Can you see this now?
Yes, sir. हेलो, सर हाँ Sir, बोलो। there's no. हाँ चलेगा, सर का पहला इंपॉर्टेंट है। The wavelength of light. वो जो कंप्यूटर वाला है ना, उसको बोलो ना कि वो चालू करने के लिए काम, और उसका नंबर जीपे में कर देता हूँ उसको थोड़ा एडवांस। अरे अपना कंप्यूटर बनाने को दिया था ना उसको, तो उसको बोलना कि आपका जीपे नंबर कौन सा है, तेरा पूछ लो अगर खुला रहेगा तो उसको बोलना अपना काम चालू करना है कि हमको एक हफ्ते में बना के दो। मुझे नाम तो याद नहीं है, उसका नंबर रहेगा। हाँ वही उसको नंबर, उस पे फोन पे बात करना, उसको ना हमारा काम चालू करो, आपका ईमेल जीपे नंबर दो, उस पे एडवांस भेज देते हैं। 2 रहेगा तो काम हो जाएगा ना सबका अपना। हेलो, यस सर हाँ, सर हमारे बुक में न्यूमेरिकल्स कहाँ पे है? पेज नंबर 10 पे दिख रहा है, बी के ऊपर हाँ लिखा है, देखो, वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ पर्टिकुलर। या सर yes, या now सर now see how to सर do it. एंड आई इवन वांटेड टू आस्क कि यहाँ पे लैम्डा का साइन, लैम्डा के म्यू, हाँ म्यू, म्यू किसके लिए यूज किया जाता है? Lambda is used for wavelength. हाँ Lambda is for wavelength, वेवलेंथ। and mu we are using for micrometer or micron, ओके सर, हाँ और लाइट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके सर। सर लाइट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है वो माइक्रोमीटर में रहता है? नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई भी यूनिट नहीं, इट इज कंपैरिजन, हाँ नो ओके यूनिट। सर। Now wavelength 5800 we want to convert into nanometer. I don't know nanometer conversion, but I know angstrom and meter conversion. 1 angstrom means 10 raised to minus 10 meter or not? Tell me. 1 angstrom Yes. is 10 raised to minus 10 Yes, meter. Correct? Yes, sir. Correct. Now, can you suggest me 1 meter is how many nanometer? 10 raised to 9 or not? Yeah, 10 raised to 9. So this will become 5800 into 10 raised to minus 1 or not? Yes, sir. That Yes. means 580 or not? तो हो गया ना, हो गया, बल्ले बल्ले। हाँ, क्योंकि 10 आर्मस्ट्रांग 1 nm था लास्ट टाइम फाइंड किया तभी, तो हाँ। करेक्ट भी है, मतलब वो भी हो गया, Yes. वेरीफाई भी हो गया। Yes, correct. Absolutely right. See, physics you should get always full mark only. But initially you have to scratch your head to understand so many things. Or make teacher in scratch his head to explain you. हाँ, तभी तो मजा आएगा ना। हाँ सर। इसमें दोनों आंसर्स हो गए। No. Right now we got one answer. Then we have to convert into meter. Fortunately we got, but we'll show separately. 5800 into 10 raised to minus 10 meters मिल गया ना? Yes, that means 5.8 into 10 raised to minus 7 meter. Yeah, completed. Then I'm clearing this. फाइव into 10 raised to minus 7 कैसे हुआ सर? minus 10 है ना? No, see, 5800. Can you write 5.800 into 10 raised to plus 3? हाँ सर। So into 10 raised to minus 10 will become plus 7, minus 7. अच्छा तो सर you have to get the dot after the first digit और Always. उसके बाद जो भी हुआ वो डालना है। हाँ, into 10 raised to. Can I clear this now? Yes sir. Not. नहीं, yes sir, yes sir. So we got 5800 angstrom as 580 nanometer. Now again, wavelength
This is B part. Each part you do separately to make it presentable. So this is nothing but 5,800 into 10 raised to minus 10 meter. So 5.8 into 10 raised to 3 into 10 raised to minus 10 meter. 5.8 into 10 raised to minus 7 meter. Copy. Yeah, Khushbu and Ivani followed? Yes. ठीक है. Sir, third step we can omit, na? Yeah, you can. Okay, sir, done. Second question, Sir, wait. once again I am doing, we have already done. Once again I am doing. Size of bacteria is 1 micrometer. Find number of bacteria in 1 meter length. Size of one bacteria is given 1 micrometer. Then find the number of bacteria in 1 meter. Let number of bacteria be n. Therefore, n bacteria into size of one bacteria is 1 mu is total length 1 meter. So n into 10 raised to minus 6 is 1. N will be 1 upon 10 raised to minus 6. N equal to 10 raised to 6. Shall I explain again? One Yes, sir. bacteria is 1 mu, n bacteria n into 1, but total is 1. Na? Yes, sir. So I followed that concept. Let number of bacteria be n. So n bacteria into size of 1 present in total 1. This everybody is clear, or you want me to still explain? Sir, understood. Sir, clear. Okay. Third one. One. Hmm. Sir, I did some mistake. Hmm? Hmm. Acha, I took meter. Micro you have to convert into meter. This is micro is 10 raised to minus 6 meter. Micron means actually micrometer. So this meter both side gets cancelled. That's what it comes. Yeah. Sir, last week we saw our classes. We had come. Yeah, Who has missed? he had come to take book. We had come to Sir, take sir, book. can you go back? Yeah. He had senior classes. You saw the class? Yeah, sir, done. Not from inside, just from outside. Arey, Sir, yeah, we yeah. तो Next Sir, time. but it was visible, thoda. No. Next time you, हाँ. whenever you are coming, tell me. I will show you. Yes, sir. No, sir, हाँ, actually, yeah. we had come to take the maths book. Math book. Acha. So I will just prepare solution of some numericals. I will call you and show the class. Yeah, sir. Shall I clear now? Yes, sir. Third sum. Distance of galaxy from the Earth is 5.6 into 10 raised to 25 meter. So distance I am writing D is 5.6 into 10 raised to 25 meter. Assuming the speed of light, I am writing speed of light as S, 3 into 10 raised to 8 meter per second. Find the time it will take to travel the distance. So funny. Speed is distance upon time. So time is distance upon speed. Distance is 5.6 into 10 raised to 25.
upon 3 into 10 raised to 8. 3 into 1 is 3. Remainder will be 2, 26. 3 8s are 24. Remainder 2. 3 6 are 18. Remainder again 2. 6 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 will be recurring, it is called. This is 25 minus 18 is minus 8 is 17. So I can round off and write 1.87 into 10 raised to 17 second. Clear? Sir, because second will be in denominator and will be 1/2 ना, तो ऊपर आ जाएगा वापस. 1/2 नहीं है, वो स्पीड है, स्पीड. नहीं that नहीं. अच्छा. और वो हाँ. s के है सेकंड ना. If we take units, Hmm. if we take units, तो ms -1 होएगा, तो जो s हाँ वैसे ऊपर चला जाएगा. करेक्ट. S means second. सर मतलब हमें राउंड ऑफ करना है ना. Right up to 2 digit. You can leave like this also. I rounded off so that you should not worry कि why it is not matching with textbook answer. सर और पॉइंट डालना कंपलसरी रहता है क्या? See, there is a rule to write values before decimal. Generally, it should be 1 digit. This is called one order of magnitude. In higher class, we'll study. Yeah, sir. Not in this sum. I was talking that even before, while we were doing sums, for example, 1 angstrom. वहाँ पे if we write 58 into 10 raised to -8 meter, then it is not okay. No, you should write Scientific 5.8 notation. into. This is rule. In 11, this is same chapter now you are having in 11th standard science. So they will extend further this chapter. That rules are given there. Sir, it is scientific notation. Yeah, scientific notation. Actually, there is one value thing called as order of magnitude. So as per that rule, all the values must be rounded off to the nearest integral power of 10. तो सर जो भी आंसर आता है we need to See, round it off to. Suppose I get answer 5,200 into 10 raised to 5. Then this is not correct. It should be 5.2 into 10 raised to 8. ऐसा लिखना चाहिए. But sir, how do we know when to make it? Like आपने ऐसे 1.866 को 1.87 कर दिया, तो हमें कैसे पता चलेगा कितना तक करना है? Like we can turn that into 1.9 also. No, always rounding off should be 2 digit, not 1 digit. So to 2 digits after the point. Yeah, नहीं तो error आएगा ना. Okay. Because 1.866, somebody is writing 1.9, तो उसने 0.334 इतना एक्स्ट्रा कर दिया ना, इसका मतलब एरर हो जाएगा 3.34 का परसेंटेज. That is not allowed. सर गैलेक्सी हमसे इतनी दूर है कि लाइट के स्पीड से भी जाएंगे ना तो भी हम लोग को 1 साल लग जाएगा. साल लग जाएंगे. इसलिए तो इतना दिन लगता है ना वो लॉन्च करने के लिए. हाँ. So that's why they say they have to wait for longer period. Closest जब भी होगा तभी लॉन्च करते हैं. Yeah. Because orbit elliptical है ना. हाँ. तो जब भी क्लोज्ड होता है वैसा कैलकुलेशन करके तभी लॉन्चिंग करते हो. So that जब भी वो क्लोजेस्ट होगा तो it is easy for the system. बहुत टाइम नहीं लगेगा. Now sum number 4. Wavelength of light is 589 nanometer. Wavelength is denoted by lambda. 589 nanometer. What is the value in Armstrong? 589 into nanometer to Armstrong you want, huh? I know in meter first. 10 raised to -9 meter. So 589 10 raised to -9 into 10 raised to 10 in Armstrong. So this will become 5890 Armstrong. Or
If सर you can- फिजिक्स के यूनिट टेस्ट में क्या कौन से चैप्टर्स आएंगे? mostly it will be first unit test में 2 chapters, first and second. Now, or I can remember like this: 10 Angstrom unit is 1 nanometer, and then conversion. Sir, we are doing the fourth sum, right? Yeah. See, I have converted nanometer to meter, then meter to Angstrom. Directly also it is possible if you can memorize. But कितना याद रखेंगे ना? So standard conversion I'm doing. Nano is -9 and meter is 10 raised to 10 Angstrom. Sir, 1 second. I could Yes. not hear you. Which sum did you do? Fourth sum. Acha. Fourth one. Yeah. I'm doing in sequence. All I'm doing in sequence. Sir, what was the fourth sum? Wavelength of light is 589 nanometer. Find in Angstrom. Okay, so lambda is just the symbol. It is That- not the unit, na? No. Instead of writing wavelength, I wrote that symbol Ah. lambda. Okay. It is a symbol for wavelength. Yes. not the Unit. No, like time we write T. T is not Yeah, unit. It is time. symbol. Yeah. Yes, video off कर दो जरा, ये गड़बड़ हो रहा है वीडियो. Somebody is having lecture after this. 6:15 का है क्या किसी का? No, sir, I don't have. नहीं सर, पर मेरा Sir, I- 6:30 का है. Who is having? नहीं sir. Sir, आप सिखाओ. Sir I am number. having one at 6:30 sir. No. One student is having at 6:15. Who is having at 6:15? Sir number. Arav. No, Nimai. Nimai. अच्छा Nimai. Sir, I think so. One more boy, Kavya, but he's not there now. Sir, काव्या? और एक सम हो पाएगा? हाँ नहीं, होगा. Kavya is late, I think. Can I clear this now? Sir, I didn't understand sir. the second last step. Can you explain that one again? This one. Yeah, 589 into 10 raised to 9 into 10 raised to 10. This 1 meter is 10 raised to 10 Angstrom. हाँ sir. So that's why we converted that. हेलो. हाँ मैडम लेक्चर है, मैं 10 मिनट में 6:15 को भेजता हूँ. हाँ है. नहीं होगा, मैं दूसरा लेक्चर चालू था इसलिए मैं भेज नहीं पाया. नहीं उसमें ही डालूंगा, लेकिन क्या है कि आप सब आगे पीछे स्टूडेंट है ना सब, अब इनको वो ग्रुप में मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा. यस या ओके. अच्छा नहीं बहुत अच्छे सर. यस ओके मैडम. थैंक यू. Sir, so first step में ही हमने मीटर को 10 raised to 10 उसके साथ क्यों रिप्लेस नहीं कर दिया? ठीक है. हाँ. yes. See, this is conversion factor. 1 Angstrom 10 raised to -10 meter. And Sir, 1 why didn't we meter- replace the this thing? Oh wait, now I understood. What you want me to change? No, I understood. Okay. Shall I clear now this one? Done now, full? Yeah, shall I clear it? Yes sir, clear. Fifth one, see? Mass of oxygen atom. Oh, this I cannot do because I have not explained about SI unit of mass ka conversion. Sixth one. It takes 8-minute time for light to reach from sun to the earth. It takes 8 minutes for light to reach from sun to earth. So time T is 8 minutes. 8 minutes means 8 into 60 seconds, correct?
that is 480 seconds. If the speed of light is taken as 3 into 10 raised to 8 meter per second, then find the distance of between sun and earth in kilometer. Right now I will get in meter, then I will convert into kilometer. Speed is distance upon time. Distance is speed into time. Speed is 3 into 10 raised to 8. Time is 480. 3 8s are 24. Carry 2. 3 4s are 12 into 14. Into 10 raised to 8. Meter. Sir, it has to be in seconds only. Madam? It has to be in seconds only, no? Distance they want in Ha. kilometer. Any time. In Time seconds only, always should compulsory. be in second only. Because your speed is in meter No, per sir, second. kilometer is 1000 meters. Yes. So this will become 1.400 into 10 raised to 8 kilometer. Not followed. Followed, sir. See Followed, this sir. meter. In my mind I thought I am dividing by 1000. And just now Bhavya helped me divide by 1000. So I divided and wrote 1.4. Sir, that was me. Sir, Abhi. Abhi, Sorry, Abhi. Really very sorry. I will give you party to help me. Arey, sir, no need. Okay, copy this much. 1.400 into 10 raised to 8 kilometer. yeah, sir, done. Sir, we Then- can write 1.44 also. Yes, you can. But You can write. Because last zero is not important figure. Important. Except No if it is value. rupees. Rupees What? may we have to write. Rupees may it is compulsory. Say that and the Huh. So- In rupees, you have to make compulsory 2 digits now. So see, it is not like that. See, there is again, as I said, this is just tip of iceberg. You are studying the rules. If see, when I go to vegetable vendor, for him milligram is not important. But when I go to jeweler shop, for him milligram is also important. So Yeah. it depends upon what you are measuring. That rounding depends upon that. 7th one. The distance of a star from the earth is 8.33 light minute. Distance is given this much light minute. What do you mean by this statement? What is meaning of this statement? Distance is 8.33 light minute is what? Sir, it means that it is 8.33 times 3 into 10 raised to 8 meter per second. No, No, no. meter. Question sir. is how will you what is meaning of this? Sir, means the distance is 8. Distance covered by light in 1 minute. No? So it is distance covered by light in 1 minute is 8.33. This is the meaning. No? Like 1 light year. No. It is 1 distance covered by light to cover the distance in 1 year. So this means 8.33 is the distance covered in 1 minute by the light. Hai na? Sir, 8.33 light minutes means in 8.33 minutes, na? Distance covered by light. In 8.33 minutes, correct. So it is distance. It is distance covered by light in 8.33 minute. Then they are asking express this into meter. So this is 8.33 into 3 into 10 raised to 8 into 60. Okay. 3 3s are 9. 3 3s are 9. 3 8s are 24 into 60 into 10 raised to 8. Okay, this also. So I can take this is nearly
25 into 60 into 10 raised to 8. We want answer in meter. Meter. So this is nothing but 25 into 6 is 150 into 10 raised to 8 in meter. 1.5 into 10 raised to 11 meter. Followed fully? Sir, we rounded it off. 24.99 I took as 20. Yeah. Done. Yeah, sir. Yeah, sir. Got it. Complete. Now this is last sum for today. Oh, I wanted to give you test. Okay, I forgot. I'm sending the test paper on WhatsApp. Please do in 10 minutes and resend it. Okay. Okay, sir. Yes, sir. Yes. You So is it can. okay if I You can send come. till night? No problem. No problem. Till night also you can send. No problem. Sir, what is the 3 into 10 raised Sir, to wait 8 a again? 3 into 10 raised to 8 is speed of light. Okay. And 8.33 minute I converted into second. Mm, Sir, for Done. how many marks the test will be? I'm just sending the paper to you all. Sir, actually I have a class, so I'll have to send you the paper later. Send later. No problem. Yes, sir. This time I was carried away. Na? I didn't. This is 1, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 6, 9 marks paper. Sir, understand it is very satisfying when you can understand and solve all of the sum. That's very true. Yeah. Yes. So initially it takes time. Then once you have understood, now we can go fast. Sir, for how many marks the paper will be? 9 marks. 9 marks. Acha, only 9 marks. Only 9. And Hardly. what will be in it? Numericals and definitions. I have sent the paper on the group. Go through it and Okay, please sir. complete it and send me.